Welcome to another session of assembly language. Today we will discuss about binary to ASCII conversion. We will discuss about separating assembly language modules. We'll discuss about link libraries, basically creating and viewing both. Then we will discuss about different type of stack parameters, and we'll discuss about recursion. Other than this, we will discuss about basically calling C conventions. Means you have created some application in assembly and you want to call it in C. Then how you can do this, and how you can use proc directives. Now let's start with translate. XLAT. XLAT is used to translate your numeric values into its respective ASCII value. So for this translate, what we have is translate, then table name. Whatever the table name you have selected, it translate the values in terms of this. Okay. For example, here you see table we have selected as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E and F. Okay, now what I have done is I have selected here move AL comma 0A. Okay, now here I have used translate, so it has translated this 0A into this A as whatever we have selected. That means it transfers into your a specific character A. ठीक है, यानी हमने हेक्साडेसिमल जो डिजिट सेलेक्ट की थी वो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स में ट्रांसफर करके हमें दे रहा है वैल्यू को. ठीक है, नाउ टेबल की जो एनकोडिंग है, you have to take only those numeric characters only that are there in your code. Secondly, जो है आप जिन भी कोड्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे केवल वही ट्रांसलेट होंगे. दैट मीन्स सपोज you have taken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then only 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 will be translated. आप इसका ऑर्डर चाहे जो रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इसके अलावा अगर आप ABCD की भी वैल्यू लेते हैं तो मैक्सिमम F तक वैलिड है. F के बाद अगर आगे के अक्षर ले भी लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल नॉट ट्रांसलेट. Now just see what actually we are doing here is हमने एक numeric value ली यूज़र से. basically what we have done is taken some keys. यूज़र ने की प्रेस की, that value is passed into DL and we have selected BX as the character the code table. Okay, now again we have given here translate command. This translate that character into the numeric value. ठीक है, अब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमें AL रजिस्टर के अंदर मिल गई है. So we can check it out that whether it is translated or not translated. If it is translated, then we just read the number and we just print the number onto the output. और अगर ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है, in that case हम just mention कर देंगे कि ट्रांसलेट नहीं हुआ है and we just print whatever the DL value is. Now बाइनरी टू ASCII कन्वर्जन की हम बात कर रहे थे. सो वॉट एवर द नंबर इज, इसको अगर हमें ASCII में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू रीडिवाइड अगेन इट बाय 10 अगेन एंड अगेन unless the number gets vanished. Okay, so we have taken here, suppose some number is there, for example 4096 we have taken. Okay, so if you want to divide 4096 by 10,
first time it is giving 6 as remainder, and that 6 is printed onto the screen. Then again divided by 10, you will get 9 as remainder, 9 is printed onto the screen. Then 0 as remainder, then 0 is printed, and then 4 is remainder, 4 is printed on the screen. इस तरीके से एक एक करके अगर हम वैल्यूज को प्रिंट करते जाएंगे तो वी कैन प्रिंट एनी नंबर ना. इसी नंबर को अगर हेक्साडेसिमल में प्रिंट कराना है तो वी विल डिवाइड इट बाय 16 एंड विल चेक quotient and remainders again and again, and we repeat it unless we get the desired value, that is quotient as 0 and remainder as something. Now बाइनरी टू ASCII कन्वर्जन के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि BX रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं. BX में हम रेडिक्स की वैल्यू लिखते हैं, मीन्स 2 और से 8 फॉर ऑक्टल, 2 फॉर बाइनरी और 10 फॉर योर डेसिमल नंबर सिस्टम और 16 फॉर हेक्साडेसिमल. You can take any other base also as per your choice, and we divide it by this number BX again and again, and then we create whatever the output we have got, we just print it onto the user's screen after converting into ASCII. Now just see, whenever user is giving some input, user ASCII characters देता है. ASCII characters क्या होते हैं? These are some numbers written into ASCII format. So इनकी पहली 4 बिट्स जो होती हैं वो आपके वही नंबर होती हैं जो नंबर आपको चाहिए होता है in BCD format, and rest of the part is some code that is to identify that it is a numeric value. Okay, in the same manner you suppose 4096 प्रेस किया गया था तो 4 की वैल्यू में से हमने 0 की ASCII माइनस कर दी, we have got 4 here. In the same way for other also we can get the values in the similar way. Now ASCII से जब भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो here what we do, we don't go for translate option, we just calculate by taking first 4 values. Now if you want to use separately assembled modules like say two modules here is taken like rint and wsint, and you want to use it in your program, then what you have to do is you have to create their object and you have to call the object while compilation. In next part we'll discuss about rest of the things.